तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि भैया एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिमांड क्या है मार्केट में, कौन से सेक्टर्स में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जा रहे हैं, कहां पे ज्यादा प्लेसमेंट्स हो रहा है, कैंपस से कितना हो रहा है, ऑफ कैंपस से हो रहा है, और तो और भैया आपको अगर अच्छा प्लेसमेंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा अपनी जर्नी में, आइए समझते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे डेटा दिखा रहा है, राइट? दिस डेटा हैज बीन कम थ्रू अ वेरी डिटेल्ड रिसर्च व्हिच इज देयर। तो आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री फॉर लास्ट 6 years and you name the company I've placed a student in those companies. Now if you could see it out, one of the very interesting thing which is there is सबसे ज्यादा जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं दैट इज हैपनिंग इन आउटसोर्सिंग एंटिटीज व्हिच इज देयर। जैसे कि अगर मैं आउटसोर्सिंग एंटिटीज की बात करूं तो एवरीबडी इज अवेयर ऑफ ईवाई, जीडीएस, पीडब्ल्यूसी, एसडीसी, डेलॉयट, टीएसआई एंड KGS, KPMG Global Services. But इसी के साथ साथ the Indian firms have also started their outsourcing unit and parallelly there are a lot of entities those who are setting up their back offices in India. तो सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स आपको इस एंटिटीज या इस सेक्टर्स में दिखेंगी। जैसे कि अब अदानी का भी जीसीसी इंडिया में है, इन्फोसिस का काफी सारा काम जो है वो आउटसोर्सिंग वाला रह रहा है, तो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इट नाउ डेज। इनफैक्ट यूनिलीवर का काफी सारा बैक ऑफिस वर्क इज ऑल्सो गोना बी हैपनिंग फ्रॉम इंडिया। तो दैट हैज इंक्रीज्ड। इसी के साथ साथ बाकी के जो लोग हैं, बाकी के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, दे ट्राई देयर बेस्ट टू गेट इनटू सम ऑडिट फर्म्स व्हिच इज देयर एंड ऑफ कोर्स यू आर अवेयर ऑफ द ऑडिट फर्म्स व्हिच यू कैन सी आउट ऑन द स्क्रीन, राइट? KPMG, PwC, Deloitte. So these are the percentage of the people who are getting into this. Specifically, they are getting into start audit, internal audit, direct tax and indirect tax. So these are the four major domains they are getting into. साथ में बात करें बैंकिंग सेक्टर की, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ BFSI सेक्टर, राइट? BFSI सेक्टर, दिस सेक्टर इज वेरी मच बूमिंग वेयर 15% ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर गेटिंग प्लेस एंड सबसे ज्यादा इसका मार्केट लीडर है, सबसे ज्यादा जो हायरिंग करता है कैंपस में भी आके वो है ICICI बैंक। एवरी अटेम्प्ट इट हायर्स द मेनी ऑफ द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स व्हिच इज देयर, बट ओनली प्रॉब्लम इज दे ऑफर मोस्टली अ सेल्स रोल, तो दैट इज समथिंग व्हिच इज ऑन अ डाउन साइड। इसी के साथ साथ काफी सारे लोग ऑल्सो आर मूविंग टू द इंडस्ट्री साइड which is again a corporate finance, FP&A और controllership. तीन डिफरेंट नाम से आपको दिखेंगे। Lot of companies comes and hire for this roles like companies like Airtel and this. But one thing which is disappointing, काफी सारे स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट साइड भी जाना होता है, PSUs में भी जाना होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्लेसमेंट्स कम है कैंपस में। बाकी जो प्लेसमेंट्स होता है वो टेंडरिंग प्रोसेस के थ्रू होता है। अगर आपको समझना है कि भैया PSUs में कैसे प्लेसमेंट होगा, गवर्नमेंट कंपनीज में कैसे होगा, आई बटन पे जरूर क्लिक करिएगा, यू विल बी गेटिंग अ डेडिकेटेड एंड डिटेल्ड वीडियो ऑन द सेम वेयर आई हैव अपलोडेड ऑन द सेम। IB or investment banking, valuation, equity research, these are the prime roles where a lot of people target it out. But again, you can see what is the approximate placements happening in. Very less people are getting placed here. And of course, startups में भी थोड़ा सा competition ज़्यादा होता है because they look for the people who have a good spike in their CV. So this is the reality which is there for the placements in terms of a sector. Now when I talk about the demand from the company side, कि भैया companies को सबसे ज्यादा वैकेंसीज कहां पे है, तो ऑफ कोर्स आउटसोर्सिंग में सबसे ज्यादा वैकेंसी है, फिर ऑडिट में, बैंकिंग में, और सबसे कम PSUs और IB में आपको वैकेंसीज कम लगेगी, बट ऑफ कोर्स कंपटीशन ज्यादा है बिकॉज मेनी ऑफ देम वांट टू गेट इनटू। अब बात करते हैं कि भैया अपने को अच्छी कंपनीज में जाना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई हैव टू वर्क ऑन विच इज देयर। तो सबसे पहला चीज, इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और इफ यू आर समवेयर इन द CA करिकुलम, आइदर इन इंटर फाउंडेशन और फाइनल, वेर एवर यू आर इनटू, राइट, यू हैव टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन योर रेज्यूमे। हमेशा एक चीज सोचिए कि भैया आज मेरा रेज्यूमे यहाँ पे है, तो क्या मेरा रेज्यूमे चार लोगों के कंपैरिजन में हाउ इट इज गोना बी स्टैंडिंग आउट, राइट? अगर सबके CV सेम रहेंगे तो विल आई गेट अ प्लेसमेंट और नॉट, राइट? ऑफ कोर्स आपको नहीं मिलेगा। यू हैव टू थिंक कि हाउ आई कैन बिल्ड आउट अ स्पाइक इन माय CV, राइट? तो थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ गया है। देखो हो क्या रहा है, पहले क्या होता था, द प्रॉब्लम व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज, पहले क्या होता था कि इतना इंटरनेट नहीं था, थिंग्स वर स्टेबलाइज, पीपल आर नॉट अवेयर आउट द वैकेंसीज व्हिच वाज देयर। आज की तारीख में मान लो एक कंपनी को वैकेंसी डालना है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, दे पुट इट आउट ऑन लिंक्डइन, एवरी टॉम डिक एंड हैरी स्टार्ट कम टू नो दैट आउट, एंड द थिंग्स where competition have started increasing as well as the number of CAs have also increased which is there. नहीं, ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, डिमांड इज देयर, प्लीज अंडरस्टैंड इट आउट, बट द ओनली प्रॉब्लम इज स्क्रीनिंग एंड द फिल्टरिंग प्रोसेसेस हैव स्टार्ट इंक्रीजिंग, राइट? तो वो चीज काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इसी के साथ साथ जो शॉर्टलिस्टिंग है, अब ऑफ कोर्स अटेम्प्ट बेसिस पे, आर्टिकलशिप बेसिस पे होती थी, बट नाउ डेज लॉट ऑफ कंपनीज हैव स्टार्टेड शॉर्टलिस्टिंग बेस्ड ऑन स्किल वाइज। जैसे कि लेट मी गिव अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू FDD, आपका एक्सेल राउंड, एक्सेल टेस्ट होगा ही होगा, 100% है, राइट? इफ यू आर गेटिंग इनटू इन्वेस्टमेंट बैंक, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल मॉडल, आपका एक टेस्ट उसका होगा ही होगा। इक्विटी रिसर्च में जाओगे तो आपको एक रिसर्च रिपोर्ट बना के ही दिखानी पड़ेगी, राइट? कंसल्टिंग में जाओगे, ऑफ कोर्स यू विल बी आस्क्ड अ केस सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस एंड दे विल बी माइट बी आस्किंग यू टू प्रिपेयर सम पिच डेक और समथिंग सॉर्ट ऑफ दैट, राइट? तो ये सब चीजें हो रही है, थिंग्स आर नाउ मूविंग टू अ स्किल बेस्ड व्हिच इज देयर।
नंबर 3, इफ यू आर ऑफ कोर्स डूइंग द सीए एंड इफ यू वांट टू टेक एन एज और आप चाहते हो कि भैया आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो फोकस ऑन वन थिंग एंड दैट इज नेटवर्क बिल्डिंग। सीधी साफ बात है यार, देखो लेट्स से इफ पीपल नोज मी वेल, राइट, ऑफ कोर्स आई विल गेट अ एज ओवर अदर्स, राइट। एक कंपनी है, वैकेंसी आई, मान लो मोतीलाल ओसवाल में वैकेंसी आई या एयरटेल में वैकेंसी आई, राइट। ऑफ कोर्स एयरटेल उस बंदे को प्रेफर करेगा जो पहचान का है, जिसका मैंने काम देखा हूं। तो ऑफ कोर्स एक वर्ड ऑफ माउथ इज वेरी वेरी क्लोज एंडेड इंडस्ट्री नाउडेज, दिस इज समथिंग विच इज हैपनिंग अ लॉट, राइट। अगर आपको कोई जानता है, आपके कोई पहचान का है, तो आपको एक एज मिल जाएगा। इसी के साथ साथ थिंग्स एंड कंपनीज हैव स्टार्ट पिवटिंग टू एआई अ लॉट। यू हैव रीड अ लॉट ऑफ न्यूज कि भैया चीजें बदल रही है, एआई आ रहा है, राइट, ऑटोमेशन आ रहा है। इनफैक्ट, राइट, यू वोंट बिलीव, एक्सेल में यू कैन ऑटोमेट हेल लॉट ऑफ फंक्शन नाउअडेज थ्रू वीबीए कोडिंग एंड यू डोंट नीड टू लर्न इट आउट, राइट। तो ऐसे काफी सारे ऑटोमेशन आ चुका है इनटू अ फाइनेंस डोमेन व्हिच यू नीड टू वर्क ऑन बिफोर इट इज लेट। इट्स हाई रिक्वेस्ट टू प्लीज वर्क ऑन द सेम। If you want it out, I have created a very nice free course for all of you for AI for finance which is there, right। आप बढ़िया से देखिए, again you will be able to get the entire link on the I button ध्यान से click करिएगा और you can check the link on the description। Parallel, if you want to see that course, right, I'll just show you where it is on my website। You can also go it out on upskilling section, you click on AI for finance, right। Once you are here, you'll be able to see the level 1 which is completely free। तो भैया आप करो, right, before it is late। If you genuinely want to take an edge over others, this is gonna be a game changer for you। Moving for the next thing, right, very very interesting, nowadays everybody needs a guy who is good at one domain or one sector which is there। That means a specialization is something which people expect। So what is needed is they want you to be a master of one domain। Now very simple, let's say if you're targeting a start audit domain, right, although your articleship is not from a start audit domain, you know what a company say कि यार भाई तुम इंटरव्यू के लिए आ रहे हो, तो एटलीस्ट यू नो हाउ द ऑडिट इज डन, एटलीस्ट यू नो हाउ द लिस्टेड कंपनीज आर प्रिपेयरिंग देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एटलीस्ट यू शुड नो हाउ द ऑल द रेगुलेटरी कंप्लायंस लाइक कारो कंपनीज एक्ट एंड ऑल दिस। तो ये एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है। तो सेक्टर वाइज नॉलेज प्लस डोमेन वाइज नॉलेज का स्पेशलाइजेशन इज समथिंग कंपनीज आर एक्सपेक्टिंग बिफोर यू गोइंग फॉर एन इंटरव्यूज, राइट। जिसके पास रहता है वो 4 लोग से आगे बढ़ जाता है, जिसके पास नहीं रहता है फिर अगेन दे आर इनटू द प्रोसेस एंड रिग्रेटिंग कि यार ये क्या हो गया, तो गलत हो गया, हमें तो सिखाया नहीं था, ऐसा कैसे होता है, हमारा बॉस तो सिर्फ वाउचिंग सिखाता है, राइट। तो दैट इज समथिंग विच इज देयर। फिर अगर आपको गाली नहीं देना है और आपको जेन्युइनली पैसा बनाना है, तो भैया थोड़ा सा आपको इन सब चीजों पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू वर्क ऑन। देन वेरी इंटरेस्टिंग, यू नीड टू मास्टर वन डोमेन, आई जस्ट टोल्ड यू आउट। अच्छा, अगर आपको एक सेक्टर के बारे में भी पढ़ना है, अगेन वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग वेबसाइट, दिस इज अ वेबसाइट कॉल्ड एज investindia.gov.in। यहाँ पे आप जाएंगे तो you will be able to see lot of sector related details which has been given here, राइट। आपको काफी सारे सेक्टर रिलेटेड डिटेल्स रहेगी, अगर आपको पढ़ना है तो यू कैन जस्ट रन थ्रू इट, रीड थ्रू इट, विच इज देयर। तो दैट इज समथिंग यू कैन रीड इट आउट। After this is done, you can focus on faster learning with simulation, right? What is simulation? Simulation is a dummy data through which you can learn the things around, right? तो simulation के थ्रू आप चीजें सीख सकते हैं। Nowadays is the era where you can learn the things faster, right? जैसे कि आपको पहले आपको स्टॉक ट्रेडिंग नहीं आती थी, तो आप एक डमी डेटा पे सीखते थे, वैसे एक सिमुलेशन की काफी सारी चीजें आ चुकी है जिसके थ्रू आप सीख सकते हैं। ऑफ कोर्स दिस इज समथिंग व्हिच आई यूज इट आउट व्हेन आई एम टीचिंग इन माय गेटिंग इंटरव्यू रेडी प्री रिजल्ट बैचेस। तो उसमें मैं मार्केट प्लेस सिमुलेशन गेम खिलाता हूँ, व्हिच इज गोना बी हेल्पफुल टू द पीपल आउट। तो आप ऑफ कोर्स सिमुलेशन बेस्ड लर्निंग चीजें सीख सकते हैं। ऑल्दो यू हैव नॉट डन आर्टिकलशिप इनटू आईबी, बट व्हाट डू यू लर्न फाइनेंशियल मॉडलिंग, आप मॉडल बनाते हो, बस वैसे ही आप चीजें सीख सकते हो। Huh, one more interesting thing, find out a mentor for your journey. That is also giving you an edge so that you can move faster. Now, one very interesting thing, I want to show you again the statistics and the details of the placements which is there, right? आपको एक छोटा सा चीज़ है, मैं आप दिखाता हूँ आपको. Now, this table is something which is very interesting. You can have a snapshot of the same or you can run through it very nicely. Now, this is a attempt-wise details of the students who have qualified in each attempt. And a number of companies who have participated in the campus, number of jobs offered by campus, number of jobs accepted, and number of people got placed in the campus. Now, if you could see it out, the percentage of this is somewhere around 15 to maximum it was 40 earlier, but 40 उसके बाद कभी दिखा नहीं है for the last 2 to 3 years, which is there. Now, what is happening is, if you could see around 16, 20, 25% of the people are getting placed through campus. Please understand, I'm not saying campus is bad, please. Right, what I'm trying to say that this is the statistics of the students who are getting placed. मतलब अगर 11,000 CA बने हैं तो उसमें से 1,089 people, 1,800 people have got placed through campus, and of course this is a data which is given in the ICAI brochure itself. Now, what is something which is happening around? अगर आप देखोगे 145 companies have participated in the campus, and if you could see this attempt का भी campus, this is a list of small campus for a small companies. Around 71 companies I could see in the small campus, and this is a list of companies which are coming to the big campus, right? So of course number of companies around 130, 140 which is there.
So number of companies are coming less in the campus. But what is happening parallelly, please understand. Parallelly क्या हो रहा है कि lot of companies are coming off campus which is there. Now this is a list of companies I have pulled it out. जो भी बच्चे जनवरी में पास हुए हैं, अगले पिछले 3 महीने में कितनी कंपनीज ने ऑफ कैंपस हायर किया था? अराउंड 446, मतलब अराउंड 450 कंपनीज हैव हायर्ड थ्रू ऑफ कैंपस वर्सेस around 140 or 150 or 180 companies have hired through campus which is there. So almost double the ratios of companies are hiring off campus. Reason, of course, campus is a costlier affair for a companies. It's a time consuming process, right? और आज के जमाने में जब LinkedIn, नौकरी और ये सब पोर्टल्स आ चुके हैं, तो you know what is happening around? It's very easy for them to put a vacancies out on the public forum and get it done. राइट तो ये चीजें होने लगी हैं. तो इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड, इफ यू आर सीरियस, एंड डेफिनेटली प्लीज अंडरस्टैंड दिस आउट कि आपका प्रोफाइल स्टैंड आउट करना पड़ेगा. एंड दिस इज अ लिस्ट व्हिच वी शेयर विद विद ऑल द जीआर बैच स्टूडेंट्स, दोज हु आर अ पार्ट ऑफ आवर ट्रेनिंग बैच. तो ये मैं लिस्ट उनके साथ शेयर करता रहता हूँ. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू आउट कि ऑफ कैंपस हायरिंग इज ऑफ कोर्स गोना बी इंक्रीजिंग अ लॉट व्हिच इज देयर, राइट. तो यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट कि हाँ यार चलो मैं अब सीए बन गया तो अब ये आईसीआई का जिम्मेदारी है कि मेरे को जॉब दिलवाने को. नो, दैट इज अ माइंडसेट. यू हैव टू चेंज इट आउट इफ यू जेन्युइनली वांट टू गेट इनटू द बेस्ट कंपनीज व्हिच इज देयर. इफ यू हैव सीन माय वन ऑफ द वीडियो वेयर आई हैव put it out कि most of the companies, those who are rankers, those who are getting placed into the companies like BCG, McKinsey, right, Unilever, all those companies are not coming to a campus, guys. तो आपका presence on off campus, you should know how to apply, you should know how to cold mail, you should know how to do the things correctly. So that is something you need to work on. And parallelly, the last and the most important thing, students getting better placements, those who are preparing before the interview. That means what I'm trying to say is, right, please understand what is the journey of every student, right? The journey of every student is, right, everybody wants to earn a money, but when do you earn a money? Of course, the day you become a chartered accountant. Now, what is a major time gap the student have is between the CA final exams, right, and the results are out. This is a duration where you have to pivot yourself for your journey. Now, if you do not pivot yourself for this journey, of course, it is going to be a bottleneck and it is going to be a problematic situation for you. Why? Because the day your results are going to be out, you will get hardly a week's time to prepare for yourself for an interviews which is there. Right? And this is a time where you have to leverage your time, prepare well, communicate well, find out the references, connect with your friends, ensure that your CVs are strong, ensure that your CVs are customized based on the domain which is there. So the people, those who are working during this duration are getting an edge over others, those who are working later. तो दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इट आउट. बच्चा बोलता है सर मुझे तो नहीं पता रिजल्ट नेगेटिव रहेगा कि पॉजिटिव रहेगा. अरे भाई क्या दिक्कत है, राइट? आज से ये सोच कि मेरे सीवी में अगर मैं 4 नई चीज डाल दूं तो ऑफ कोर्स इवन इफ माय रिजल्ट इज नेगेटिव, ये क्या 4 चीजें हट जाएगी क्या? द आंसर इज नो, दैट इज नॉट गोना बी रिमूव्ड, राइट? इट इज गोना बी फॉरएवर इन योर सीवी. तो प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर रिज्यूमेस आफ्टर योर रिजल्ट्स आर आउट, व्हेनेवर योर रिजल्ट्स आर आउट, टिल द before the result, whenever the exams are over, till the results are out, start working during this duration. This is gonna be giving you an edge and this will create a differentiation in your placements, right? So that is something which I wanted to tell you out. Also, we are into this industry, we help students to interview, train, place, right? If you need any help, you can check our batches, you can check our website which is there, and of course our next batch for interview training is starting from 20th of May. Of course, I don't know when you're watching this video. If you're watching it later, you can check the next batch link on the description as well. With this parallelly, you can check our website. We have created a tools.cmonk.com where you can prepare your CVs, which is there. Very nice CVs you can create within 3 odd minutes. We have a dedicated video on the same. You can check it on my YouTube. You can practice mock interviews through this website. If you are looking for a specialization into our domains, you can go for multiple masterclasses, which is there, right? If you're looking for AI course, that is there. Other courses are also there. And if you're looking for interview batches, that is also happening it out on the interview placement section. You can just check, everything is there on our website. Do visit it out once. And if you need anything, right, do let me know in the comment section. Happy to help you out.